भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो छात्रों को संबोधित करेंगे। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भूटान पहुंचे हैं और ये रॉयल यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और छात्रों को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भूटान में हैं। नेबर फर्स्ट नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी भूटान पहुंचे हैं और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका भूटान का पहला दौरा है और रॉयल यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। तमाम यहां पर छात्र प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करते हुए उत्सुकता चेहरे पर देख सकते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे तो उनके नाम के नारे लगाए गए और एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से बाकायदा उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद जब वो नरेश से मिलने उनके महल पहुंचे, वहां पर उनको सम्मानित किया गया। भूटान और भारत के संबंध पहले से काफ़ी अच्छे हैं और उन संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नेबर फर्स्ट नीति के तहत भूटान पहुंचे हैं और वहां की रॉयल यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और तमाम यहां पर छात्र इस वक्त उत्सुकता से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सवाल छात्रों के मन में हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनको संबोधित करेंगे। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की, कल की, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और लोग एक झलक पाने के लिए यहां पर उनका इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी ही उत्सुकता और भावुकता से उनसे मुलाकात की, सबका संबोधन स्वीकार किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी मोदी के नारे से पूरा भूटान गूंज उठा और अब प्रधानमंत्री मोदी रॉयल यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद छात्रों को संबोधित करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री मोदी रॉयल यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और छात्रों को संबोधित करेंगे, किस तरह से देखा जाए? ये बड़ी बात है। एक तो युवाओं तक पहुंच की जो कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की, खासकर भारत में भी आपने देखा होगा पिछले 6 साल के कार्यकाल में लगातार युवाओं और बच्चों और स्कूल के बच्चों से जो उनके संवाद होते रहे हैं वो दिखाता है कि कैसे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है और भारत और भूटान के बीच ऐसे संबंध हैं। और कल मोदी जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ऐसा पड़ोसी होना हमारे सौभाग्य की बात है। ये भारत की प्रायोरिटी ये दिखाता है कि भारत की प्राथमिकता में भूटान कहाँ निर्भर करता है, चाहे वो सामयिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो। भूटान भारत की सारे राजनीतिक और राजनीतिक कारणों से भारत में काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे बीच वहाँ के छात्रों से और वहाँ के लोगों से मुलाकात करना ये दिखाता है कि भारत और भूटान के बीच क्या संबंध है और आने वाले दिनों में नेबर्स फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री की मोदी की, उस पर वो कितने कारगर तरीके से काम करने वाले हैं और छात्रों के बीच वो संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर आपने ये दर्शाएगा कि जो आने वाली भी पीढ़ियां हैं वो भारत के प्रति और नजदीकी महसूस करें, ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अमिताभ, जिस तरह से जो युवा हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, चाहे हिंदुस्तान की बात करें या फिर भूटान की, तो उसी पहलू को ध्यान में रखते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ऐसा माना जाए? बिल्कुल, दोनों देश, दोनों भूटान हमारा पड़ोसी देश है और ऐसा पड़ोसी देश है जिसका सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण जगह है। एक तो भूटान के रहने में भारत चाइना को काउंटर करने में मदद मिलती है। भारत से अगर पूरी तरह से वहाँ पूरी इन्वेस्टमेंट कर भूटान को आर्थिक रूप से भी भूटान भारत पर काफी निर्भर करता है, तो भूटान में इन्वेस्टमेंट भी काफी भारत का काफी ज्यादा है। तो भूटान जैसा पड़ोसी, ये इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान जैसा पड़ोसी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और दोनों देश आगे मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा एयरपोर्ट से लेकर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर किया और सड़क पर लोग मोदी भी कर रहे थे जब वो जा रहे थे। तो एक तरह तो भारत माता की और मोदी जिंदाबाद के नारे लगना भी काफी महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज तो साफ है कि दक्षिण एशिया में भूटान ही एक ऐसा देश है जो अब तक चीन के झांसे में नहीं आया है और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के लिए भारत ने काफी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि भारत ने काफी सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपनाया है और वहाँ के जो बम धमाके हुए थे उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया था और बयान भी दिया था। और जहाँ तक चीन की बात है, वो एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर भी रहा था भारत को घेरने की, लेकिन
भूटान इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टि से। और भारत इसलिए चीन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, ये ऐसे देशों में, म्यांमार हो, इन सब देशों में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इन सब देशों से अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। और भूटान शायद इसलिए भी भारत के स्कीम ऑफ थिंग्स में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक चीन के झांसे में नहीं आया है। चीन जो और डोकलाम में भी भूटान ही था जो उस इलाके में डोकलाम का इलाका है जिसमें भारत ने चीन की घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। तो काफी ये भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ऐसे में वहाँ के विद्यालयों के जाना, वहाँ बिल्कुल अमिताभ, आप नजर बनाए रहे, जल्द आपके पास फिर से लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिसकी वजह से केलंग से मनाली के बीच सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से केलंग से कोकसर के बीच भी आवाजाही प्रभावित हुई है। मनाली से कोकसर की ओर जा रहे 119 वाहनों के फंसे होने की जानकारी मिली है। सेना के भी 52 जो वाहन हैं वहां पर फंसे हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं ब्यास नदी में उफान की वजह से कई जगहों पर रास्तों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ समेत दूसरी तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से केलंग से कोकसर के बीच जो जाने वाला रास्ता है वो प्रभावित हुआ है और तमाम इस वक्त जो वाहन है वो वहां पर फंसे हुए हैं। 119 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं और जो सेना की गाड़ियां हैं वो भी वहां पर फंसी हुई हैं। लगातार वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं ताकि रास्ता साफ किया जा सके। एसडीआरएफ के अलावा तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। मनाली से कोकसर का जो रास्ता है इस वक्त वो प्रभावित हुआ है और तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। ब्यास नदी में उफान की वजह से इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर से ब्यास नदी ने अपने प्रचंड रूप में आ चुकी है और इसमें हम खड़े ब्यास नदी के किनारे पे, जहां पे नेशनल हाईवे जो रोहतांग के लिए जाता है उस किनारे पे हम खड़े हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें ब्यास नदी की आपको दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं कि किस तरह ब्यास नदी ने एक बार फिर से जो है अपना रुद्र रूप यहाँ पे धारण कर लिया है। ये वही मंजर है जब पिछले वर्ष सितंबर के महीने में जब फ्लड आया था तो उसमें भी कुछ ऐसा ही मंजर था और सेम वैसा ही मंजर इस बार भी देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं कि किस तरह ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। हालांकि जिस तरह घाटी में पिछले कल से बारिश हो रही तो इससे कहीं ना कहीं काफी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि इस ब्यास नदी के इस प्रचंड रूप को देखते हुए जो है मनाली प्रशासन ने भी जो है अलर्ट जारी किया और सभी लोगों से जो है नदी से दूर रहने की यहाँ पे अपील की है। हालांकि अभी तक किसी तरह के जो कोई जानमाल की है वो नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। मौसम विभाग की ओर से 24 घंटे आने वाले समय में लगभग 2 दिन के लिए कह रहे हैं कि 2 दिन आने वाले समय में भी अभी बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। और आज भी हम देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसमें कांगड़ा जिले में बहुत ज़्यादा हुई है, चंबा में बहुत हुई है, कुल्लू में बहुत हुई है और यहाँ तक शिमला में भी बहुत हुई है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक तैयारी की दृष्टि से अगर आप बात कह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में हमने जो इस सारी जानकारी को लोगों तक पहुँचाने का एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रयत्न किया है। National Assembly and the National Council of Bhutan, distinguished Vice Chancellor and faculty members of the Royal University of Bhutan, my young friends, Kuju Jogpala, Namaskar. It is a wonderful feeling to be with you all here this morning. I'm sure you are thinking today is Sunday and you have to attend a lecture. But I will keep it brief and on topics that you would relate with. Friends, anyone visiting Bhutan is struck as much by its natural beauty as by the warmth, compassion, and simplicity of its people.
Yesterday, I was at Semtokhajong, the foremost example of the richness of Bhutan's past and the greatness of its spiritual heritage. During this visit, I have had the opportunity to interact closely with the present leadership of Bhutan. I once again received their guidance for the India-Bhutan relationship, which has always benefited from their close and personal attention. Now today, I am here with the future of Bhutan. I can see the dynamism and feel the energy. I am confident that this will shape the future of this great nation and its citizens. Whether I look at Bhutan's past, present, or future, the common and constant traits are deep spirituality and youthful vigor. These are also the strengths of our bilateral relationship. Friends, it is natural that the people of Bhutan and India experience great attachment to each other. After all, we are close not just due to our geography, our history, culture, and spiritual traditions have created unique and deep bonds between our people and nations. India is fortunate to be the land where Prince Siddhartha became Gautam Buddha, and from where the light of his spiritual message, the light of Buddhism, spread all over the world. Generations of monks, spiritual leaders, scholars, and seekers have burned that flame bright in Bhutan. They have also nurtured the special bond between India and Bhutan. As a result, our shared values have shaped a common world view. This is visible in Varanasi and Bodh Gaya, and also in Jongs and Chartrans. And as people, we are fortunate to be the living vehicle of this great legacy. No other two countries in the world understand each other so well or share so much. And no two countries are such natural partners in bringing prosperity to their people. Friends, today, India is witnessing historic transformation in a wide range of sectors. India is eliminating poverty faster than ever before. The pace of infrastructure construction had doubled in the last 5 years. We have just pledged about $15 billion for next generation infrastructure. India is home to the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, that offers health assurance to 500 million Indians. India has among the cheapest data connectivity in the world, which is directly
and indirectly empowering millions. India is also home to among the biggest startup ecosystem in the world. This is indeed a great time to innovate in India. These and many other transformations have the dreams and aspirations of the youth of India at their core. Friends, today I stand here among the best and the brightest youth of Bhutan. His Majesty told me yesterday that he interacts with you regularly and had addressed the last convocation. It is from you all that Bhutan's future leaders, innovators, business persons, sports persons, artists, and scientists will emerge. A few days back, my good friend, Prime Minister Dr. Chering wrote a Facebook post that touched my heart. In that post, he mentioned about exam warriors. And just now also, that student mentioned about that book. The Exam Warrior, a book I wrote about how to face exams without stress. Everyone faces exams in school and colleges and also in the larger classroom of life. Can I tell you something? Much of what I wrote in Exam Warriors is influenced by the teachings of Lord Buddha, particularly the importance of positivity, overcoming fear, and living in oneness, be it with present moment or with Mother Nature. You are born in this great land. Therefore, these traits come naturally to you and shape your personality. When I was young, the search of these traits took me all the way to the Himalayas. As children of this blessed soil, I am confident that you will contribute to finding solutions to the problems of our world. Yes, we have challenges, but for every challenge, we have young minds to find innovative solutions to overcome them. Let no limitation constrain you. I want to tell you, there is no better time to be young than now. The world today offers more opportunities than ever before. You have the power and potential to do extraordinary things which will impact generations to come. Find your real calling and pursue it with full passion. Friends, India-Bhutan cooperation in hydropower and energy is exemplary. But the real source of power and energy of this relationship are our people. So, it is people first, and people will always be at the center of this relationship. This spirit is clearly seen in the outcomes of this visit. Going beyond the traditional sectors of cooperation, we are seeking to cooperate extensively in new frontiers
From schools to space, digital payment to disaster management, our cooperation in all these sectors will have a direct impact on young friends like you. Let me give some examples. In this day and age, it is crucial to connect scholars and academics beyond borders so that creativity and talent of our students bring them at par with the best in the world. Cooperation between India's National Knowledge Network and Bhutan's Dukren, which became a reality yesterday, will serve this purpose. It will provide secure and fast connectivity between our universities, research institutions, libraries, healthcare, and agricultural universities. I urge you all to make full use of this facility. Friends, another example is the frontiers of space. At this very moment, India's second moon mission Chandrayaan-2 is on the way to the moon. By 2022, we intend to place an Indian in space on Indian spacecraft. All these are the results of India's own achievements. For us, the space program is not just a matter of national pride. It is a vital instrument of national development and global cooperation. Friends, yesterday, Prime Minister Chairing and I also inaugurated the Thimphu ground station of the South Asia satellite and expanded our space cooperation. Through satellites, benefits of telemedicine, distance education, resource mapping, weather forecasts, and even warning of natural disasters will reach even remote areas. It is even a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan's own small satellite. I hope that someday, soon, many of you will be scientists, engineers, and innovators. Friends, for centuries, education and learning have been central to this ties between India and Bhutan. In ancient times, Buddhist teachers and scholars formed the bridge of learning between our peoples. This is a priceless heritage which we wish to preserve and promote. Therefore, we welcome more students from Buddhism, more students of Buddhism from Bhutan in institutions such as Nalanda University, a historical global seat for learning and Buddhist traditions, which is revived at the very place where it existed 1500 years ago. The bond of learning between us is as modern as it is ancient. In the 20th century, many Indians came to Bhutan as teachers. Most Bhutanese citizens of older generations would have had at least one Indian teacher during their education. Some of them were honored by His Majesty last year, and we are grateful for this gesture, generous and kind gesture.
Friends, at any point of our over 4,000 students from Bhutan are engaged in studies in India. This number can and should grow. As we march forward to develop our countries, we also need to keep pace with ever-changing technological landscape. It is therefore important that we collaborate in all areas of emerging technologies and education. I am happy that yesterday we have begun new chapters of engagement between India's premier IITs and this prestigious university. We hope that this will lead to more collaborative learning and research. Friends, in any part of the world, if we ask the question, what do you associate with Bhutan? The answer will be the concept of gross national happiness. I'm not surprised. Bhutan has understood the essence of happiness. Bhutan has understood the spirit of harmony, togetherness, and compassion. This very spirit radiates from the adorable children who lined the streets to welcome me yesterday. I will always remember their smiles. Friends, Swami Vivekananda had said, every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. Unquote. Bhutan's message to humanity is happiness. Happiness which springs from harmony. The world can do with a lot more happiness. Happiness which shall prevail over mindless hate. If people are happy, there will be harmony. Where there is harmony, there will be peace. And it is peace that will help societies achieve progress through sustainable development. In a time where development is often seen in conflict with tradition and the environment, the world has much to learn from Bhutan. Here, development, environment, and culture are not at loggerheads, but are in synergy. With the creativity, energy, and commitment of our youth, our nations can achieve all that is required for a sustainable future, whether it is water conservation, or sustainable agriculture, or making our societies free of single-use plastic. Friends, during my last visit to Bhutan, I had the privilege to visit the Temple of Democracy, the Parliament of Bhutan. Today, I have the honor to visit this Temple of Learning. Today, we also have in the audience honorable members of the Parliament of Bhutan. I especially thank them for their distinguished patience. Democracy and education both aim to set us free. Neither can be complete without the other, and both help us to achieve our fullest potential and be the best we can. This seat of learning will once again set free our spirit of inquiry and will also keep the student within us alive. As Bhutan soars high in this
and neighbors, your 1.3 billion Indian friends will not only just look on and cheer you with pride and happiness, but also they will partner you, share with you, and learn from you. With these words, I would like to thank the Chancellor of the Royal University of Bhutan, His Majesty, the King, the Vice Chancellor, and the faculty of the university, and all of you, my young friends. You all have honored me with your invitation and given me so much time, attention, and even more affection. I go back with a lot of happiness and positive energy from you all. Thank you very much. Tasi Del. और प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और यहां पर छात्रों को संबोधित किया। तमाम अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर छात्रों के सामने पेश की। उन्होंने कहा कि वो भूटान के भविष्य के सामने हैं और ये भविष्य आगे चलकर भूटान के लिए तरक्की भरे काम करेगा। और तमाम इतिहास और कल्चर की भी बात की कि ना सिर्फ पड़ोसी होने की वजह से एक दूसरे के पास है, बल्कि कई तमाम चीजें हैं जो भारत और भूटान को एक दूसरे से जोड़ती हैं। व्यास नदी की उफनती लहरों ने कुल्लू में बने अस्थाई वैली ब्रिज के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इस पुल से ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कुल्लू से लाहौल के लिए जाने वाली गाड़ियों को एहतियातन मनाली में रोक दिया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से लाहौल जाने वाले कई रास्तों पर पानी भर गया। बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। लगातार जो है पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ब्यास नदी में जो है लगातार जलस्तर की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 मील के आसपास जो है बादल फटने के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आई है। ऐसे में अगर बात करें तो ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम टापू पुल के पास है, जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से इस पुल पर जो है वो आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ब्यास नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं इस पुल को भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर दरारें पड़ी हुई है, उसके कारण कहीं ना कहीं इस पुल की जो पुल पर जो जिस तरह से आवाजाही थी वो फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन ने जो है इस पुल पर आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं कि बाढ़ जो लगातार जो पानी है, ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और पिछले 1 घंटे से अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ये जो पेड़ खड़े नजर आ रहे हैं, ये पेड़ भी जो है अभी अभी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर बह गए हैं। ऐसे में जिस तरह से लोग जो सामने आप देखते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्यास नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं ब्यास नदी के किनारे पर जो लोग रह रहे हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चामुंडा मंदिर के पास बनेर नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसे देखते ही डर लगता है। महज चंद मिनटों में कई लाख क्यूसेक पानी इस नाले से गुजर रहा है। नाले का पानी किसी भी समय मंदिर परिसर में घुस सकता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके पास जाने में भी खतरा है। ये पानी अब मंदिर के पास बने शमशान घाट के भीतर घुस गया है। बनेर नाले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चामुंडा मंदिर के पास ये बनेर नाला है, जो इस वक्त रौद्र रूप धारण कर चुका है। पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। महज चंद मिनटों में कई लाख क्यूसेक पानी इस नाले से होकर गुजर रहा है और नाले का पानी किसी भी वक्त मंदिर परिसर के अंदर घुस सकता है। हालांकि मंदिर परिसर के पास जो शमशान घाट है वहां पर ये पानी दाखिल हो चुका है और पानी के बहाव की देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज बहाव है। यहाँ तक कि लोगों को इसके पास ना आने की सलाह दी गई है, क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते ये चेतावनी भी जारी की गई है। हिमाचल की चंबा में लगातार हो रही बारिश की वजह से होली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास काफी नुकसान हुआ है।
बारिश की वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा का पूरा रोड धंस गया। पहाड़ से मलबा रोड पर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। यहाँ पर पहाड़ अब भी लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता खतरनाक हो गया है। इसके अलावा पहाड़ों पर बारिश के बाद तेजी से आ रहे पानी की वजह से यहाँ के नालों ने नदी का रूप ले लिया है, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर के काम में इस्तेमाल हो रही मशीनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और कई क्रेन तो पानी में डूब गई हैं, जबकि कुछ को कर्मचारियों ने बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी कुकाबुरा ने क्रिकेट की बॉल को स्मार्ट बॉल में बदलने की तकनीक इजाद करने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने क्रिकेट की बॉल के अंदर एक चिप फिट करने की तकनीक इजाद की। इस तकनीक से गेंदबाजी और बल्लेबाजी का रियल टाइम डेटा मिल सकेगा। यानी चिप लगी गेंद से जब बॉलिंग की जाएगी तो गेंदबाज के हाथ का एंगल, गेंद की रफ्तार, पिच पर टप्पा खाने के बाद की रफ्तार समेत सभी जानकारियां तुरंत मिल जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक चिप लगी स्मार्ट बॉल को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी इसके इस्तेमाल की योजना बनाई जा सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में स्मार्ट बॉल के इस्तेमाल के लिए आईसीसी से अनुमति लेनी होगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश की वजह से ब्यास नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से 2 लोग बाढ़ में फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही बचाव दल वहां पहुंचा और बाढ़ में फंसे दोनों लोगों को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन के एक हिस्से में रस्सी बांधकर बाढ़ में फंसे लोगों के पास फेंका गया और उस रस्सी के जरिए एक आदमी को बचाने की कोशिश की जाने लगी। काफी मशक्कत के बाद उस आदमी को नदी के किनारे लाया गया, जहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। कुछ देर बाद बाढ़ में फंसे दूसरे आदमी को भी इसी तरह बचा लिया गया। जम्मू के कठुआ में भारी बारिश के बाद वहां से बहने वाली उज नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। एक गांव के 14 लोग सैलाब में फंस गए, जिनको एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। बहाव इतना तेज था कि रस्सी पकड़े होने के बावजूद एक लड़का लहरों में फंस गया। ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब एक ही परिवार के 14 लोग इस सैलाब में फंस गए और इन लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये देखिए कि किस तरह खींचकर इन लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।